Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about some of MCQs which are related to myocardial infarction, and in your exam definitely this question will come. ये MI का basic data है जो अगर आप solve कर लेते हैं तो आपको काफी काफी easy लगता है myocardial infarction और बहुत easily आप solve भी कर पाएंगे. So guys, let's start the questions. It's very important. Question number one in front of you, you are educating a patient. I'm so sorry. So you are educating a patient about the causes of myocardial infarction. This statement by the patient indicate they misunderstood your teaching and require you to re-educate them. इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको देखने से लगेगा कि इसको दोबारा से पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो बात बोल रहा है वो गलत बोल रहा है. So guys, option number A, option number B, option number C and option number D. You have 5 seconds, then after I'm going to give you the answer. 1, 2, 3, 4 and 5. So guys, the answer here is option number B. The most common cause of a myocardial infarction is coronary artery disease, not coronary spasm, which is uncommon. So option number B will be the correct answer. Question number 2 in front of you. You note in the patient's chart that the patient recently had a myocardial infarction due to a blockage in the left coronary artery. Left coronary artery. You know that which of the following is true about this type of blockage. So you have to give me the answer. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. So guys, the correct answer is option number B. Left coronary artery blockage can cause anterior wall death which affect the left ventricles. Okay, so the rationale behind this question is the LCA, if blocked, can cause the most amount of damage to the heart muscle. It affects the anterior part of the heart muscle which affect the left ventricle. The left descending artery is most likely to be affected by the coronary artery disease. So guys, now the question number 4 in front of you. So we skip the question number 3. Question number 4. After myocardial infarction, at what time approximately do the macrophage present at the site of injury to perform a granulation of tissues? So guys, आपको मुझे आंसर देना है कि आपका granulation वाला जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. The correct answer is option number C, 10 days. सो गाइज आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो 2 घंटे से आप स्टार्ट कर सकते हो मायोग्लोबिन्स, देन योर ट्रोपोनिन एंड देन CKMB. सो यू नो 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, then after at 24 hours you will be seeing some changes, and at the 10th day you will be seeing macrophages present at the site of injury. So 10th day is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू. 24 to 36 आवर, जैसे कि मैंने आपको बताया 24 से 36 घंटों के अंदर अगर मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है तो क्या होगा. व्हाट यू विल सी एट द इन्फ्लेमेशन साइट. So guys, you will be seeing neutrophils. So option number A is the correct answer. Let me mark it for you. So option number A and 10 day. Option number C. Option number you will be your question number 2. The answer will be option number B. And for question number 1, the answer will be option number B. Let's do another question, guys. Question number 6. The question number 6 in front of you. A patient is complaining of chest pain. Okay, so the patient is complaining for the chest pain, and you obtain 12 lead ECG, CST elevation in lead 2, 3, AVF. What area of the heart does this represent? तो आपको मुझे बताना है लीड नंबर 2, लीड नंबर 3, AVF क्या रिप्रेजेंट करता है. सो गाइस, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका है इंफीरियर. इसका रैशनल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मैंने आपको ऑलरेडी एक ईसीजी पढ़ाया था, आप देख सकते हैं. सो गाइस, वी हैव दिस ईसीजी एंड आप ईसीजी के अंदर देख सकते हैं जो आप इंफीरियर में रेड कॉर्नरी आर्टरी आप देख सकते हो. सो रेड कॉर्नरी आर्टरी इंफीरियर AVF. यू कैन सी हियर रेड कलर राइट कॉर्नरी आर्टरीज. ओके, सो AVF. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका AVF है वो आपका इंफीरियर व्यू, और जो आपका क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि AVF किस में देखने को मिल सकता है. सो गाइस, क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, AVF. सो आप देख सकते हैं AVF 2 and 3. द आंसर विल बी इंफीरियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस. ऑन द EKG द लेटरल व्यू. लेटरल व्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया. तो लेटरल व्यू में आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन सी लीड. So guys, your answer will be option number C. 1 AVL, V5 and V6
will be the correct answer. So guys, last question. Question number 9. Doctor has ordered cardiac enzymes on a patient being admitted with a chest pain. You know that dash level elevate 2 to 4 hours after injury to the heart, and it's the most remarkable regarded marker by providers. So guys, what do you think for question number 9? The answer will be D, troponin. Okay. So question number 10 in front of you. Please solve this question. A patient is complaining of chest pain on the bedside cardiac monitor. You observe pronounced T wave inversion. You obtain the patient vital sign and find the following. BP is very high. Saturation is bit 96. Rate is 20. Most important nursing interventions क्या क्या रहेंगी? So questions options are in front of you. आप देख सकते हैं options को. A to I आपके पास options है from A to I. So guys, let me give you the correct answer. The correct answer is A, D, E, G and H. So the correct answer are option number A, option number D, option number E, option number G and H. These are the correct answers. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को. यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. For question number 11, the correct answer is option number A, and the rationale is nitroglycerin can cause hypertension. However, if there is a significant drop in the blood pressure with systolic BP less than 90, further dose or nitroglycerin should be hold. The doctor should be notified for further orders, especially since the patient is still having chest pain and T wave inversions. Morphine should not be given because it causes hypotension. आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी सही लगे होंगे, आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे. सो गाइस, इसी तरीके के अगर वीडियोस आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डे आफ्टर बिफोर डेफिनेटली एमसीक्यूज की वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय.